Now we start new exercise 3.5. Question number 1. Which of the following pair of linear equations has a unique solution? Means one and only one solution, means intersection line. No solution, means a parallel line. An infinite solution or many solution, means identical line, same line. In case of the unique solution, find the solution by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमको इसमें क्या करने का है, कब पहले चेक करने का है कभी ये यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तो इसका आंसर फाइंड करने का है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो इसका आंसर फाइंड करने का नहीं है। बराबर। नो नंबर 1, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 आर कंपेयर विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू -3, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -9, c2 इक्वल टू -3। We write the coefficient. In first equation, coefficient of x is 1, y is -3, constant term c1 equal to -3. In second equation, 3, a up to 3, b2 -9, c2 equal to -2. Now by taking ratio, a1 upon a2 equal to 1 upon 3, b1 upon b2 equal to -3 upon -9, 3 1 जा 3 3 जा, minus minus cancel, 1 upon 3, c1 upon c2 equal to -3 upon -2, negative cancel, 3 by 2. From this we find that a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2. We see that this is condition for no solution. This is condition for no solution, means a parallel line. Now we can start the question number 2. We have write in standard form 2x plus y minus 5 equal to 0, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ इक्वल टू 5 था, हम लेफ्ट साइड ले गए तो माइनस हो गया। सिमिलरली इन सेकंड इक्वेशन 3x plus 2y minus 8 equal to 0. This is equation number 2. Are compare with a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Therefore a1 equal to 2, b1 equal to 1, c1 equal to -5, a2 equal to 3, b2 equal to 2,
C2 equal to minus 8. Now taking ratio A1 upon A2 equal to 2 upon 3, B1 upon B2 equal to 1 upon 2. Therefore, A1 upon A2 not equal to B1 upon B2. Therefore, equation has a unique solution. For unique solution, we have to write x upon equal to y upon equal to 1 upon. x upon के लिए पहला a1 को प्रेस करने का, a1 a2. We have to write 1 2 -5 -8. For y, we have to press b1 b2. We write -5 -8 2 3. For constant number, we have to press c1 c2. Write 2 3 1 and 2. Now we can multiply principal x diagonal and secondary diagonal. X upon 1 into -8, so -8 minus 2 into -5 -10, y upon -5 into 3 -15 minus -8 into 2 -16, 1 upon 2 into 2 4, 3 into 1 3. Therefore, x upon -8 plus 10, y upon -15 plus 16, 1 upon 1. Now we write x upon 10 minus 8, so 2, equal to y upon -15 plus 16, 1, equal to 1 upon 1, 1. Comparing first and last, x upon 2 equal to 1, y upon 1 equal to 1. We get x equal to 1 2 ja 2, y equal to 1 1 ja 1. So solution of pair of linear equations is x equal to 2 and y equal to 1. यहाँ क्या था, तो यूनिक सॉल्यूशन था इसलिए हमने फाइंड किया. यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता तो फाइंड करने का नहीं था. क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ इट इज यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड विद हेल्प ऑफ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, so that we find by the cross multiplication method value of x and y. Thank you.